that you're doing fine. Don't worry for the results. Because if you worry for the results, results can really let you down sometimes. But then if you just keep walking in that direction, whatever result is coming, it's a learning process. I know, I feel every step you take, it's a learning process. The whole procedure of IVF, what I went through, and the whole everything, I felt that I have become much more stronger. In fact, I was once told by, I got 2 3 calls from same doctor's patients, because he would give my number, and I was open to it. I said I don't want to shy. Like when I went for bariatric surgery, I was open to it, and me and my husband just spoke for the doctor. We did a small film for him. So I mean, I think that a lot of people hide this, that it's IVF baby, or so I don't feel that. So whatever it is, just talk about it, and express it. Think things really. So communication is something, one skill I would always like to give my daughter. Express, talk, whosoever it is. किसी से भी बात कर लो, पर कर लो. Don't keep it within you. And Absolutely. thank you that you are always there for me to talk sometimes when I'm not able to talk to anybody else. But even if sometimes a message can do wonders. So thank you so much. जख्म छुपाने नहीं है, कितनी सुंदर बात कर दी आज। जख्म छुपाने नहीं है, हमने क्या किया उन जख्मों को पीछे छोड़ने के लिए, वो भी छुपाना नहीं है। अगर हम यही सबको बता दें, if we are able to express and put our biggest wound out there with vulnerability, with love, that makes us expansive, that doesn't contract us. What a beautiful message, Sumita. And how lucky is Samaira. Thank you, Anand. आए, दुरुस्त आए, पर जब आए तो बहुत अच्छे आए। और रश्मि, आपने क्या समझा अपनी जिंदगी से? और वो बच्चा आपका सेकंड वाला 4 रस्तों के बीच में बच गया, 4 रस्तों के बीच में और लोगों के बीच में बच गया। क्या समझी आप इससे? अनु, ये वाला भी बचा और पहले वाला भी बचा। तो आप नहीं बचेंगी? मैं बच चुकी हूँ। हाँ जी। तो he had a febrile seizure. The first one had a febrile seizure, and he fainted. And so we rushed him to the hospital at that time. And my husband was panicking and said, "मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा गया, मेरा बच्चा गया." And in the car, I said, "Stop muttering." And we reached the hospital. I went inside. I took the child inside, went to the pediatrician who was already on hold. We helped him, resuscitated him, and then he revived, and he's there with us. And I mean, that very day, the only thing I could say was, stop muttering and mutter God's name if you can. वाओ, कितना आसान है ना बच्चों को ये कहना, रश्मि, कभी कभी नहीं, वो किया मैंने उस दिन, और आज भी याद आ गया है। आज आप अपने लिए ये करेंगी? यस। और मैं लाउडली सबके सामने कह रही हूँ, और रश्मि आप सबके सामने यही प्रॉमिस करेंगी। ये जो एडवाइस दिन दीपेश को दिया था, ये आज मैं आप पर फेंकती हूँ। क्या आप ये एडवाइस दे सकती हैं अपना ही किसी और? क्या था एडवाइस, जरा एक बार फिर से बता दें लाउडली। Stop muttering anything. If you want to mutter, mutter God's name. कुछ अगर कहना ही है तो खुदा का नाम ही ले लेते हैं। एमी बकवास पैदा नहीं ना हमारी जिंदगी में। शब्द कितनी बड़ी बात कर गई आज। अर्चना, आपकी क्या सीख थी इसमें? What did you learn from your pregnancy, your child, your story? And I'm grateful to God and to everybody because this program was created in 20 minutes. Yes, Anu, just one thing, that there is nothing in our control. Both the deliveries, both of them, beautifully teaching me absolute depth कि ये जो कंट्रोल इशू है ना लाइफ का, इसको भूल जाओ। कम व्हाट मे, कंट्रोल तो किसी तरह का नहीं हो सकता, चाहे तुम डॉक्टर बन जाओ, चाहे तुम कुछ भी हो जाओ। पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, अंडरस्टैंडिंग, लर्निंग, everything
just keeps sitting on a pedestal and watching you, that how are you dealing with the situation. And by God's grace, I have, I mean, the outcome in both the situation being positive. I cannot say how I would have reacted elsewise, but yes, definitely, I did not shiver in those moments, and I am very proud of saying this in both the situations. अगर आप शिवर करा भी तो भी चॉइस नहीं है, बच्चों ने तो आना ही था. नहीं करा ही नहीं ना अनु, इतना दिमाग ही नहीं चलाया. हाँ वो ठीक बढ़िया. है, यू नो के बिल्कुल के ऑपरेशन होना है वो. दैट लेडी व्हेन द फर्स्ट टाइम व्हेन द अल्ट्रासोनोग्राफिस्ट वेंट पेल, and trust me, when my elder one was born, my husband was there in the OT, and he said that the baby was white, and as the cords were removed from white, she turned to blue, and then the pink aura of what a baby came back to her. They saw the blood flowing through her because she was there in the OT for the C-section. He says the baby was white. I was shocked कि बच्चा ऐसे होता है, white होता है बच्चा. And then when my gynae, she removed the cord, she said that beautiful blue and the pink, I saw all the colors. So yes, I never used my brain. I just enjoyed whatever it was. And जिसने आना है उसने कुछ भी करके आना है, और जिसने नहीं आना उसने नहीं आना. You can do nothing about it. चाहे तुम डॉक्टर हो, चाहे तुम कुछ भी हो, कंट्रोल हो ही नहीं सकता. It's not in your control. Never. It's never there. ना आना Somebody else is pulling the strings. था. Exactly. बिल्कुल. ना सांस Absolutely. कंट्रोल है हमारा, ना बर्पिंग पे कंट्रोल है. नहीं. कंट्रोल करने चली हैं और कहाँ कंट्रोल. बस जिंदगी को अगर जी लेना हंस के, बहुत बड़ी बात हो जाएगी. सुमिता, आपके साथ एक आप भी कुछ बोल दें बिफोर. हाउ डिड यू गेट इंस्पायर्ड बाय दिस होल प्रोसेस? व्हाट डिड इट डू फॉर यू? एंड पता है आपको ये पार्ट अभी फेसबुक पे जा नहीं रहा है. दैट डजंट मैटर, इट्स ऑलरेडी रिकॉर्डेड एंड इट विल गो लेटर. ये जो constant innovation is what is required. Yes, Sumita. Yes. So one learning again, I would say, for me was a very big chapter of life. I learned. I used to think that this is something which is very difficult for me. I would not be able to do it. But when I underwent the whole journey, and when finally Samara was born, uh, so वो पूरा 9 months or what, I was like fully this thing. I had a breakdown after she was born. Like it was like but I think that was a good breakdown, because the moment I entered my home, carrying her in my arms, that was the time when I broke down. But that was like those happy tears, I would say. And I got a lot of support, a lot of love from everyone around me. So I'm so thankful to God that uh, all those people were there with me forever, supporting me and loving me. So I believe that whenever you have your difficult times or challenging times, if you get the support of your loved ones, that is your real strength. Because that is the time when you feel that you have that love and support always with you, and that keeps you going through whatever the challenging times are. So देखो, that's for me. तो टूटोगे और टूटोगे तो फिर जुड़ोगे भी. यही True. ग्रोथ है. Yes. हम टूटेंगे ही नहीं. हम अगर टूट गए तो हम कैसे टूट गए? डॉक्टर क्वेजी यहाँ होते, उनको तो मैं याद कर लेती हूँ. जरूर कहते कि दिस इज टू ग्रीन अ पर्सन. कॉन्स्टेंटली सोच रहा है कि मेरे साथ ऐसे कैसे हो गया. Yeah. Why me syndrome? That's a very big syndrome तुम्हारे for all of us. क्योंकि और पता है 8.25 बिलियन लोगों के साथ यही होता है. और उसमें से अगर आधे लोग लेडीज हैं तो प्रेगनेंसी तो एटलीस्ट 2 मिलियन के साथ तो होती ही है. तो आप सोच लो, आपको अगर ये लगता है, इफ यू फील यू आर गोइंग टू एस्केप समथिंग, whether it is life, creating life, escaping a disease, or treating a disease, think again. You never know what is required to sail through. So I really thank all of you
and Thank you so much, Anu. Thank very you so much. मुझे It was good to see you suddenly and talk suddenly. You know, Yeah. एक topic, guys, I need your help on sex. What about sex? आज बात करी थी, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे. Okay. Tomorrow, Impulsive. impulsive. Okay. Tomorrow 26 Jan है. Republic है. आजाद. ठीक है. क्या आप भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है. आप कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हो? सेक्स वाला. बोलो. हाँ बोलो. हाँ, ठीक है. Done. हाँ. कितने बजे? I'll definitely try. What time? ट्राई वाला कौन था? मैं अर्चना. एक ही हूँ. करोगे या नहीं करोगे? नहीं वो बात. अबे You can't करेंगे try. तो अलग बात है. ट्राई हैविंग इंटिमेसी, या तो आप करोगे. अबे वो तो करेंगे. प्रोग्राम पे आने की बात हो रही थी ना. मुझे एसएमएस कर देना तुम तीनों. Definitely. What time? Yes, Rashmi, you want to say something before we go? Time for tomorrow. Time for tomorrow. Tomorrow is Tuesday. We could do it in the morning at about 12 to 1. Would that be good for all of you? And Rashmi, you will make the pamphlet, send it to all of us, and all of us will rotate it everywhere, just like we did today. Okay. Send me, Okay. Sumita and Archana, please send me good snaps of yours. Thank 2 you. snaps और डाल देना उसमें. नहीं दो बहुत है. आप दोनों की डालो. आप दोनों हो ना. No, मैं यही खींच देती हूँ, हम यही सारी रोटेट डाल कर दूँ. देंगे. Wait a minute then. Guys, you can't escape. अबे उस टॉपिक के साथ फोटो तो मतलब सेंसुअल हो जाएगा. अरे रुको यार, ये तो फोटो ही नहीं खींच रहा मेरे यहाँ से. नहीं हम भेज देंगे. अनु खींचना है, आपके एंड से खींचना जरा, अगर खींचना है. मेरा फोन बंद हो गया. I can take a snap.